Bismillahirrahmanirrahim. I am Sheikh Mulako, lecturer in Zoology. I am lecturer in Government Degree College, Kandiaro. Dear students, my subject is Zoology. I have selected topic from chapter number 3 and class first year. My topic is mode of action of enzymes. Means how enzymes work and factors affecting the activity of enzyme. Which factors are responsible or which factors they affect the activity of enzymes. So first of all, mode of action of enzymes. How enzymes work. Enzymes ये केमिकल्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Mode of action of enzyme. There are two theories about mode of action of enzyme. Number one theory is Key-Log theory. It was given by Fisher scientist in 1898. Then it was improved by Paul Filder and D.D. Woods. Another theory for the mode of action of enzyme was given by Koch-Lent. This is a modern theory, and it is called induced fit model. Then we will discuss about factors affecting the activity of enzyme. Which factors are substrate concentration, temperature, pH, coenzyme, activators, inhibitors, types of inhibitors, water, radiation. Now we are starting Key-Log theory. Key-Log theory. Key-Log theory, according to this theory, that the enzymes, they work on the substance. They work on the substance. That substance is called substrate. And the molecule of substrate is smaller than the molecule of the enzyme. And there is just like there is specific key specific key for specific log, or specific log can be unlocked by a specific key. So there is a specific enzyme for a specific substance. For example, there is enzyme lipase. It is specific for only for lipids. Enzymes, they have, you can see here, enzymes, they have a dimple structure. This is a dimple structure. This is called active site. This is called active site, and this is an enzyme. Here only a specific substance they will attach. Which type of substrate? Suppose I am writing here many substrates. Here only this substrate will fit. Only that substrate will fit, which is complementary to the active site, to the active site of the enzyme. These are the substrates. Now what are substrates? Substrates are substances on which enzymes work. इसमें क्या होता है कि एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, और एक्टिव साइट जो होती है वो स्पेसिफिक होती है,
जिसमें स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होगी। ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट विल बी अटैच्ड। यहाँ पे मैंने 3 सबस्ट्रेट्स लिखी हैं, सबस्ट्रेट नंबर 1, सबस्ट्रेट नंबर 2, सबस्ट्रेट नंबर 3। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी और इसकी, यानी ये जो सबस्ट्रेट है ये इसमें फिट हो सकती है, ये सबस्ट्रेट इसमें फिट नहीं होगी, ये भी सबस्ट्रेट इसमें फिट नहीं होगी। तो फिशर ने कहा कि भाई जिस तरह स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक हमारे पास चाबी होती है, स्पेसिफिक की होती है, तो स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होगा। This theory depends on the physical attachment only. इसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों में फिजिकल अटैचमेंट होती है, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी no any kind of you can say any kind of chemical changes occur. Here I am writing here, you can see this is a log. तो इसमें जो चाबी होगी तो यहाँ पर ये जो लॉक है, दिस इज लॉक। लॉक इंडिकेट करता है एंजाइम को, और ये जो की है ये सबस्ट्रेट है। तो स्पेसिफिक कीज इज फॉर स्पेसिफिक लॉक, जस्ट लाइक दैट की लॉक थ्योरी वर्क्स। नाउ induced fit model. This model was given by Koshland in 1959. According to this model, इस मॉडल के मुताबिक सबस्ट्रेट और एंजाइम में अटैचमेंट तो होगी, मगर एंजाइम्स और जब सबस्ट्रेट मिलेंगे, मतलब कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम पे अटैच होगी तो एंजाइम में कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी, एंजाइम में केमिकल कॉन्फ़िगरेशन जो एंजाइम का है वो चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, व्हेन सबस्ट्रेट attaches on active site of enzyme, it induces a change in enzyme configuration. एंजाइम कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। एंजाइम कॉन्फ़िगरेशन, एंजाइम according to this theory that there is chemical attachment, and the substrate and enzymes, when they combine together, when substrate fits in the active site of enzyme, इसमें क्या होगा कि जब कोई भी सबस्ट्रेट
ये इसकी एक्टिव साइट है। कोई भी सबस्ट्रेट इसमें अगर अटैच होगा तो एंजाइम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होगी। देन वी हैव factors affecting the activity of enzyme. Which factors they affect the activity of enzyme? Another topic is factors affecting the activity of enzyme. Which factors affect the activity of enzyme? First of all, we have substrate concentration. Concentration of substrate. Enzymes are specific to specific substrate. enzyme जी जेका क्वांटिटी आहे, जेतरी enzyme जी क्वांटिटी हुंदी ओतरी सबस्ट्रेट की क्वांटिटी हुजण खपे। मतलब त सबस्ट्रेट ऐं एंजाइम जो पाण में रिलेशन आहे। जेतरा तव्हां जेको आहे एंजाइम्स खणो था ओतरा तव्हां सबस्ट्रेट खणो, पर जेकर सबस्ट्रेट हद खां वधीक थी वई, अगर आपकी सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाती है तो एंजाइम्स जो है वो अपना काम करना छोड़ देंगे। किस हद तक enzymes, the activity of enzyme is directly proportional to the quantity of the substrate. अगर हद से ज्यादा हो गए सबस्ट्रेट्स तो एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास होता है टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर specific, there is a specific temperature for each enzyme. Particularly we discuss about the enzymes of human body. There is the optimum temperature. Now temperature optimal temperature for human enzyme is optimal temperature. Now what is optimal temperature? Optimal temperature is such type of temperature during which the activity of enzyme is maximum. इसमें एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो ज्यादा से ज्यादा होती है। मतलब कि एंजाइम अपना काम जो है वो जो है वो अपना काम ज्यादा करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी इज, फॉर ह्यूमन एंजाइम्स इज 37 centigrade. If the temperature increases above the 37 centigrade, then the enzymes they will be denatured, और 0 सेंटीग्रेड पे भी एंजाइम्स जो है अपना काम नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम इज व्हाट? इट इज part of the enzyme. When there is a prosthetic group, when it is organic, coenzyme, ये एंजाइम है, इसका ये वाला, इसको कहेंगे हम एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को, और इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, और अगर नॉन प्रोटीनस पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक का होगा तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम्स। देयर आर सो मेनी कोएंजाइम्स सच एज NAD, FAD, काफी जो एंजाइम्स हैं वो कोएंजाइम के बगैर काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास होते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स आर केमिकल्स
they activate the activity of the enzyme. They activate the performance of the enzymes. Suppose if we have a magnesium can increase the activity of the phosphatase enzyme, and if we have a zinc, it can activate the carbonic anhydrase enzyme. Carbonic anhydrase enzyme is found in the blood. It helps in transportation of carbon dioxide and oxygen. उसके बाद हमारे पास होते हैं इनहिबिटर्स। नंबर 4 में हमारे पास जो है मैंने नहीं पढ़ा है पीएच। नंबर 3 पीएच है हमारे पास। तो हर एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच होती है। देयर इज ऑप्टिमल पीएच for each enzyme. Optimum pH is such type of pH in which enzymes they perform their maximum activity. Suppose हमारे पास पेप्सिन है, वो एसिडिक कंडीशन में काम करेगा। अगर हम उसको जो है अल्केलाइन कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ऑप्टिमल पीएच पेप्सिन के लिए क्या है 1.4 means acidic condition is suitable condition for a suitable pH for the pepsin enzyme. उसके बाद हमारे पास जो है वो इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स आर द केमिकल्स, they also they inhibit or they reduce the activity of enzymes. Now I am writing here the definition of inhibitors. Inhibitors are those chemicals, are those substances which reduce the activity of the enzyme, activity of enzyme. हमारे पास दो इनहिबिटर्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। नाउ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? We have two types of inhibitors. Number 1, write down types of inhibitors. Number 1, competitive inhibitors. These are the mimics of the substrate. ये सबस्ट्रेट जैसे होते हैं, ये सबस्ट्रेट नहीं होते। मतलब कि सपोज करें these are mimics are identical to substrate. These are not substrate but like substrate. These are like substrate. Suppose करें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सबस्ट्रेट्स है, एक सबस्ट्रेट नंबर 1 है और दूसरी सबस्ट्रेट ये, और एंजाइम जो है you can see that both substrates are like substrates. Substrate number 1 and
substrate number 2. Both are same, but enzyme have to work on the substrate number 1. enzyme को जो है वो इस सबस्ट्रेट पे काम करना है, इस सबस्ट्रेट पे। तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट 1 ये एक्टिव साइट पे आ जाएगी। ये सबस्ट्रेट नंबर 1 enzyme the particular substance or particular substrate for the enzyme is substrate 2. But what happens, there is these two substrates are similar, these are mimics of each other. This is number 1 substrate, its name suppose is A and its name is also A. Enzyme have to work on the substrate A. This A means small a, and substrate A means capital A. The substrate which its name is capital A substrate will bind here, will attach to the active site, so the enzyme will not perform it. It will not attach to the proper substrate. So the activity of enzyme is also in this way reduced, and those inhibitors which attach on the which are mimics and which attach on the active site. This is active site of the enzyme. When substrates which are not a particular substrate for enzymes, but they are like substrates, when they attach on the active site, that kind of inhibitor is called competitive inhibitor. Now, non-competitive inhibitor. Number 2, non-competitive inhibitor. Non-competitive inhibitor, it is also an inhibitor. It is inhibitor that inhibit the activity of enzyme. It does not attach on the active site, but it attaches on the another site other than active site. Definition is here: when inhibitor substance attaches the enzyme at an other site rather than active site. The site other than active site is called allosteric site. Those substances, those chemicals, when they attach on the enzymes,
Here is an enzyme and this is the active site. There are the substance. When these substances they attach enzyme, it has to attach on this site. It has to attach on the active site, but it does not attach on the active site. It attaches to the allosteric site. That kind of attachment will reduce the activity of enzyme, and this non-competent inhibitor is also called allosteric inhibitor. Then we have another factor called water. Water is also essential for the activity of enzyme. For example, without water, the germination of the plants cannot take place. Then we have another factor called radiations, and so some radiations are very harmful for the activity of enzymes. Then they can destroy the enzymes, the structure of enzymes.